Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Zaji. Good morning, Varun. Good morning, Anurag. Good morning. Yeah, I'm coming to that point. Give me 2 minutes. Sir, like you said yesterday, if the market continues the moment, you will be seeing the drop soon. Can you please explain mapping of yesterday's fall at fall without creating any setup? How to identify this kind of fall? Who said this didn't create a setup? It created a setup. Week 1, week 2, week 3. Right? Scenario 2, chapter 3 wing. Right? So the formation of the second type of 3 wing was formed. With that form only the market started to fall. And there was a setup. Okay. And definitely 1 hour demand completed within 30 minutes. So we had to take the 4 hour screening. So this was the 4 hours demand mapping what we had done, and we had exactly set to exit at the point of 3,800. Group may be here. Didn't expect this much, sir. Captured only 490 pips. Hello, sir. Gold का daily view. बताएंगे पंकज थोड़ा टाइम दो. Good morning, Ritesh. Yes, that's right. I captured till 1 hour demand. Okay, no worries. Anyone can say, what are you guys noticing in this current range today? ये जोन ऑफ एक्शन में आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो? क्या ये मार्केट ऊपर जाएगा? क्या क्या ये मार्केट नीचे का लिक्विडिटी हंट करेगा एट द करेंट स्टेज? कोई बता सकता है? यूट्यूब वाले मेंबर्स. एंड व्हाट कुड बी द रीजंस?
I'm waiting for the answers. हाँ स्मिता मैम, आज थोड़ा आराम से करेंगे. Let's get deep so that YouTube members also get the understanding of what is happening. Yeah. Anyone? नहीं नहीं, वो मैसेज भेजने से पहले रुक जाओ. दूसरे लोग भी बताने दो. Let them also do their analysis. TTS level is at 3889, so it can go up and then come down. It can go up, it can come down. मुझे नहीं चाहिए. एनालिसिस के हिसाब से मार्केट क्या करेगा? That TTS level which you are talking is of a swing trade. We are talking in perspective of ID trade, intraday, right? Do the analysis in perspective of intraday, not in perspective of swing. वैसा देखा जाए तो यहाँ से ही चला जाना चाहिए था ना. Why didn't it go, right? So do the same kind of analysis what we did yesterday and reapply it in today's scenario. You will find the answer. Don't hurry the process. Do the analysis. Starting from screening. 1 hour ka screening first karo, come to 15 minutes. Then let us know what is happening. Good one, Smita ma'am. अंबिका थोड़ा ऊपर कर लो. डिमांड डिमांड. हाँ सप्लाई नहीं. परफेक्ट. गुड मॉर्निंग फैजा. Sir, at current level S2 B1 setup formed towards long and the current candle is red. What will be the view now? Zaji, that's fine, right? आपका जवाब का आंसर मैं देता हूँ. यहाँ पे S2 B1 सेटअप लॉन्ग के लिए अभी तक क्रिएट नहीं हुआ.
जय जी, आप कब से वॉल्यूम को मिस करना लग गए? सॉरी, मिस करने लग गए वॉल्यूम को। रॉन्ग राइट? मिस मत करो वॉल्यूम को। जब दोनों तरफ से विक फॉर्मेशन हुआ है विद इन 1 आवर टाइम फ्रेम, व्हाट इज इट इंडिकेटेड जय जी? ये कैंडल में भी हाई विक है, ये कैंडल में भी हाई विक है, एंड इट्स इन द रेंज ऑफ 1 आवर. What do we call this point? वन आवर के चार्ट के हिसाब से जय जी क्या दिख रहा है आपको? We had learned in the wick creation session, right, जय जी? मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, किस तरफ की विक्स क्रिएट हुई है? एंड अचानक से आके यहाँ पे दोनों साइड विक क्रिएट हुई है, मतलब क्या होगा? हाँ, गुड आंसर फैजा। गुड वन आशिफ। Everyone has the opportunity. We have done it. We are doing it on a regular basis on live streaming. तो आप लोगों को भी पता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, उसका जवाब मेरे को आ गया ऑलरेडी। उसको मैं मना किया हूँ यूट्यूब में डालने के।
थैंक यू समटाइम्स कंफ्यूजन आता है नहीं कोई बात नहीं है गेट इट क्लियर previous 1 hour candle volume and wick shown bullish bias but current high volume candle is not previous volume breakout so first it should grab sell side liquidity then give a volume breakout and then go down. Okay, let's understand Ankit Sharma's analysis. Right? In the pursuance of the movement, 1 hour का वॉल्यूम के हिसाब से हाई कैलिब्रेशन पॉइंट छोड़ो अंडरस्टैंड दिस यू आर 80% राइट 20% रॉन्ग अंकित जैसे कि मेरे को आंसर्स नहीं मिला है सो आई ओनली एक्सप्लेन हाई कैलिब्रेशन पॉइंट कंप्लीट हुई थी एट दिस रेड कैंडल राइट मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट थ्रू आउट द न्यूयॉर्क पीएम सेशन बिकॉज 15 मिनट्स में एक इंटैक्ट जोन ऑफ एक्शन पेंडिंग था राइट जो कि ये वाला this entire zone of action was pending. So hence the movement continued in the direction to complete the liquidity grab with the intact. With that, if you notice in 1 hour, जय जी आपको भी फिर से explain कर दे रहा हूँ. Please don't repeat the same mistake. Okay. So each and every movement till the high calibration point was towards buying side. Right? New York PM session maybe market continued with the buying side for the liquidity hunt with comparison of intact level, right? Post that at this current stage in the Asian session हमारे पास दोनों तरफ का विक फॉर्मेशन हुआ एक शॉर्ट के साइड एक लॉन्ग के साइड जब दोनों तरफ का विक फॉर्मेशन होता है हमेशा याद रखना फर्स्ट इंडिकेशन शुड बी ऑलवेज वॉल्यूम राइट फ्रॉम द आइसबर्ग zone there is a high volume break with the high volume break always remember there will be one drop as per the first wick creation right in 15 minutes if you notice this is a high wick point right with the high wick point यहाँ पे क्यों ये hunt generate हुआ at the first place this green candle hunt was created because everyone was looking towards a short from this break. So on that proportionate, market tend to make everyone sit all the retailers towards the short and then take them out because this one candle was a formation of nice 60 pips, right? So with this, always remember market in 1 hour produced a volume towards a short means यहाँ से एक movement of 150 to 200 pips का short दिखने को मिल सकती है right? From that, what do we see? There is a formation of S2B1 with the S2B1 formation till where you will look for a trade-off execution, always to the first intact level. With the first intact level, in the continuity of the movement till a new formation is built with the volume. Okay, Ankit? So this is how you look for an analysis in pursuance of a trade, which gives you a right movement to sit into. Hope everyone got the point. So where are the liquidity grab points? Where are the intact levels at the current scenario? मेरे लिए ये वाला filling चाहिए. With that, there should be a recreation of a setup. तब तक के लिए हम intact level से ही long करते रहेंगे उससे पहले नहीं. जय जी अगर लॉन्ग के लिए मूवमेंट था तो आपको ग्रुप में लॉन्ग के एनालिसिस मिलते हैं ना शॉर्ट की नहीं
right? Now say me, how do you map this demand? कहाँ से लेके कहाँ तक की मूवमेंट allocation में होगी? And what should be the preservance in persona to understand a proper directional movement? Good morning, Veer. Few minutes, man. I'll definitely answer your question, but थोड़ा time दे दो. जीपी भाई, जब तक आप बताते नहीं हो तब तक मैं वीर का एनालिसिस करके दे देता हूँ. ठीक है. So in what pursuance you are looking for an execution to understand 4 hours? How do you start mapping the things for 4 hours allocation? Start from first come first serve point of interest. Where is first come first serve point of interest that you will be looking for? So allocation perspective will be taken in consideration to your first demand. First demand mapped, 100% rejection. Same point of interest will be taken, continued. If there is break and continue, right? We don't have the nearest point of action. What do? We map the second allocation, right? Second serving. When the second serving come into the play, what do we notice? 100% break and continue. First rejection 150, second rejection 200. 200 say nahi hai movement. Then what do we allocate? We allocate a surplus. Surplus is taken from the top till the first rejection point, which is 150. With the 150 range of motion, the new allocation point will be stabilized with the previous. Okay. So this is how you look for a re-established movement to the previous action plan. How to align time zones and broker time. Some candles is different in different brokers. Always work with UTC. Okay. So hope where you have got your analysis and perspective of the markets. Current demand can come down to 3847 as it is high wick, so taken from the wick to wick. Not bad.
POI formation, to understand POI formation, Veer, you need to have a proper range of communication. Matlab, every green candle needs to have a red candle as a partner, and every red candle should have a green candle as a partner. Then only POI is formed, not prior to that. Am I clear? If the supply and demand is very small, for an example, you saw a market कि मार्केट इतना गिर गई एंड उसके लिए हमारे पास डिमांड छोटा था. स्क्रीनिंग के हिसाब से छोटा कभी नहीं होता है, राइट? सो 15 मिनट्स का लेवल 200% ब्रेक होता है एंड यू डोंट हैव ए सरप्लस, कम टू 1 आवर का 200% ब्रेक होता है, सरप्लस मैपिंग नहीं है तो 4 आवर्स. So that is how you establish a directional contribution towards the swing trade and hold the trades in the direction, right? So उसके लिए हम बोलते हैं screening is very much important for swing traders. Daily 4 hours, 1 hour 15 minutes. Intraday वालों के लिए 1 hour 15 minutes. So whenever the major line of action gets into the play, the proportionate angle will always take a line of credit to execute the trades and hold if there is a break in 15, 1 and 4. So the line should always carry forward with the screening perspective of each other. जब तक आप स्क्रीनिंग नहीं करोगे, सिर्फ 15 मिनट में ही देखते रहोगे, then you will get confused. For intraday traders, it should be 1 hour and 15 minutes. For swing traders, it should be daily 4 hours, 1 hour and 15 minutes. Okay, Veer? Can you do the screening of gold in 1 hour? सब एक ही साथ में चाहिए अनुराग. Step by step. First, complete one which you haven't completely understood. Once you completely understand the concept, then we'll move to the next chapter. Okay? You're mapping my You're mapping my ICT working skyrocket together. I'm getting 1:5 trades easily. You're mapping my ICT working skyrocket together. I'm getting 1:5 trades easily. Trying to learn your concept more. You're mapping my ICT. Your ICT. Okay. Where you're talking about 1:5. We are capturing in this entire last week, it's about 300 pips. That's not 1:5, that's 1:30, 1:40. What we are capturing. What am I missing in my current learning? Can you please let me know?
Good morning from Kenya. Eric, good morning. Anurag, what you're missing on your current learning is when you get into one step of action plan, you let go the others. So you have to take each and every particle of a dish to combine and create one beautiful recipe, right? सो अगर नमक है आपके पास एंड उसके साथ आपके पास प्रॉपर मसाले नहीं है तो उसका डिश का स्वाद आएगा नहीं नहीं आएगा सो इवन टीटीएस कॉन्सेप्ट इट्स जस्ट नॉट अबाउट लर्निंग वन थिंग you should combine each together. Supply and demand should be combined with TTS. TTS should be combined with minimality. Minimality should be combined with surplus. Surplus should be combined with volumes. Volumes needs to be combined with high calibration points. With that, you understand the entry setup. With the entry setup, you understand the formations. With understanding the formations, you get to know the screening, right? Once you understand screening, you are good to go in the market. So it's a step by step process. You have to take step one, step two, mix it together. Then, once you get step one and step two together, then add the third. So it's step one, step two, step three. Once you understand all step one, step two, step three together, then you take step four, then you combine step one, step two, step three, and step four. Right? Like there are 12 steps which you have to follow to get one. Yeah. Sir, I'm not comparing with you. Previously, I was 1 is to 2. Now it is 1 is to 5. So it will take time for me to get here. No, I'm not comparing at all, Veer. Okay. Please don't take me wrong. You're doing good, is what I'm saying. But don't mix a concept with another, is what I'm trying to say. अब तक के लिए आपका आरओआई बढ़ चुका होना चाहिए था आपका आरओआई बढ़ा नहीं है बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू कॉन्सेप्ट्स विथ वन एंड यू आर ट्राइंग टू मिक्स which will never work. Good morning, Sandy. How are you? Long time. How is your learning? How is your executions? How is the understanding of the markets going on? Hope it's good as of now. गुड जॉब स्मिता मैम अगस्त्य क्या कर रहे हो यार नहीं लाइनिंग लाइनिंग सही नहीं है तुम्हारा प्लीज रीवर्क गुड मॉर्निंग संजय it's about the confidence Nitesh sir. I'm trading with ICT concept from so long so कितना भी avoid कर लूँ
मेरा माइंड वो मिक्स करता रहता है but I got your point. Okay. There was a break in between, was not keeping well, will start again now. Okay. Hope you have recovered, Sandy. Good morning, Tosef. How are you? I'm doing good. How are you? कितने दिनों बाद लाइव देखा आपको? डेली तो आ रहा हूँ लाइव पे, तोसेफ. I'm doing screening in 1 hour in gold yesterday. Fall created change of character, so we will take last demand to mark supply, but it surpassed it also in continuity. So want to know what needs to be checked. So simple example, right? So in this form, what is the major thing that you have to work, right? A rejection perspective. When does a rejection perspective gets into the play? You saw a change of character at this point. Market tend to break in a go, right? But there was no as such formation in the delusional part of a creation. Matlab, market is directly going to the nearest liquidity grab point. So where was the nearest liquidity grab point? 3795, जहाँ पे हमारा exit थी. Why? What do you notice? This was the nearest point of action where the major liquidity grab was formed, right? So वहां तक की movement expected होती है हमेशा. So in that formation, what you have to do? Okay, conversion नहीं हुआ है. अगर conversion नहीं हुआ है, मतलब immediately you have to follow a step which needs to be taken under the consideration of the mapping, which is 1 hour and 4 hours, right? So 1 hour का जब भी आप level of allocation change of characters mapping के लिए देखते हो, right? Wherein the form of this point where it takes a play as a change of character, right? So there is no conversion after the break. So it means it is coming down just to grab the liquidity and continue the movement towards the long. Nothing more. Okay. मेरा छोटा भाई को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 2 महीने के लिए. 2 महीने से ट्रेड नहीं किया. आजकल हॉस्पिटल से छुटकारा आज से छुटकारा मिला सर. ओके. होप ही इज गुड नाउ. तो सर
Audio clear but video freeze or lag. Please refresh. जितने भी लोग ये जो करंट एक्सप्लेनेशन अनुराग को दिया था उसका प्रूफ देता हूँ. IST में देखना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, so that you will come to know where exactly we said everyone to exit. Not this one. रमेश को एक्सप्लेन किया था 4-5 sessions back. Please go and check. So there are two types of three wing setups. Okay. ID trades at 1626. मतलब 26, 600 pips take home. 1627. IST time frame पे डाल के check कर लो where exactly the exit was. And उसके बाद हमारा 70% rate was at 807. 20% more trades were closed at 2108. But currently remaining 10% is running. Okay. So just look in this time frame, you will understand where all the trades were closed. All the time by valid change of character या MSS जब कंफर्म होता, जब मार्केट अपना प्रीवियस मिरर स्विंग के लो को एफिशिएंसी के साथ ब्रेक करके, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ, तभी वो वैलिड होगा. ब्यूटीफुल विशाल. व्हाट इज मिरर स्विंग? ओके, वो जो भी है. If you're getting results, I'm happy for you, man. विशाल जी, आप रीअलोकेशन पॉसिबिलिटीज में ड्रॉ बैक करो, उसके साथ रीअलाइनमेंट स्ट्रक्चर के साथ फॉलो थ्रू में रहो. Currently running with 120 pips, right? MTSL should be at 100 pips. System trailing will be at 80 pips.
सर एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा चार्ट जो है MT5 के रियल डेटा से मैच होता है? जो 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था, सिर्फ वो एक ही चार्ट पैटर्न जो है वो रियल डेटा के साथ मैच होता है, उसे हम जापानीज स्टिक कैंडल पैटर्न्स बोलते हैं। To understand the exact volatility in the market. Seems like someone is testing you. करने दो यार, थोड़ा मजे हम भी ले लें। In the morning, I took first trade, sir. I took long at 3863.75. 3863. Okay. With three wing setup, there was 1 hour demand completion and volume, but the same candle hunted me out. टाइम बता दो तो सर। There is a minimality formation, guys. The demand में, okay? फिर से एक रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा with the liquidity grab point. Where is the liquidity grab? At this current stage with no wick formation. सर मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे ओनेडा एफएक्स मार्केट के चार्ट्स ये MT5 के चार्ट से मैच नहीं करते। जैसे यूरो यूएसडी का चार्ट है, जो उसकी ओपनिंग हाई लो क्लोज MT5 पर जो है वो और एफएक्स मार्केट के चार्ट्स पर अलग अलग दिखा दे रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ही गलत था विशाल, पहले वाला। आपको कौन सा मार्केट या कौन सा कंपनी डेटा पूछना था? So, in perspective of MT5, and if you are looking in perspective of Honda or FX Market or Capital.com or investmentbrokering.com, वहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग व्यू में हल्का सा डिले रहता है, राइट? एंड MT5 में मूवमेंट वॉलेटिलिटी के साथ दिखाती है, बिकॉज दैट इज रियल टाइम अब्जॉर्प्शन। अगर आपको 10-20 पिप्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं, मतलब देर इज हंट गोइंग ऑन एंड यू हैव टू लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन इन परस्पेक्टिव ऑफ द सेटअप्स। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से लेवल डाले हो,
तो MT5 में वहां पे 10-20 पिप्स आपको ज्यादा ही दिखेगा. Let it be towards the short, let it be towards the long. ठीक है. Here minimality M1 is created as it is within 50%, so it can cover up to 100%. फर्स्ट टारगेट 100% होगा जो कि लिक्विडिटी क्रैप पॉइंट है, उसके बाद 150%. ओके अनुराग. और विशाल एक चीज मेरे को बताओ, आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज है, so why are you in pursuance looking for multiple allocations and segments, right? You should have been a multi-millionaire till now, right? You won't be needing any kind of support because you're already mentally stable in executing the trades. Okay, so here I am correct in mapping, so confirming it. Yeah, you are right. The only conclusion that you have to follow over here, Anurag, is there will be one certain hunt again at the liquidity grab point. उस point of action के साथ you should look for an execution. ठीक है? But mapping wise, you have done it right. 150 pips running, guys. MTSL at 130 pips, system trailing at 100 pips. हर्षिनी क्या कर रहे हो? सिस्टम ट्रेलिंग 100 पिप्स MTSL पॉइंट में लगा दिया. 9 AM सर, कोलकाता टाइमिंग. ओके. 9 बजे. 9 बजे. एक चीज बताओ तो, सिर्फ यहाँ पे थ्री विंग कहाँ पे है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, जायद जी का भी सेम क्वेश्चन था, राइट? यहाँ पे S2B1 सेटअप बन रहा है, तो लॉन्ग के लिए होगा. नहीं, वैसे थोड़ी होता है. 1 आवर का आपका विक क्रिएशन एनालिसिस का आ गया, राइट? व्हाई आर यू मिसिंग आउट ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स? एक दो दिन टाइम लो, राइट? हर एक वीडियोस को जो MNP का है वो देखो, राइट? कम बैक एंड स्टार्ट अगेन. सिंगल कैंडल थ्री विंग फॉर्मेशन थोड़ी दिखाएगा तो सिर्फ, गलत है ना? द कैंडल डजंट हैव द विक इंटैक्ट लेवल से फिर से रिजेक्शन.
टांग खींचना बंद कर दे, वरुण. He might be having some of his own consciousness, so that's totally fine. Should stream will be there for next 5 minutes. जो भी doubts है पूछ लो. Sir, okay, sir, got it. I thought 8:15. Okay, sir, got it. I thought 8:15 candle has high wick, so fourth candle entered, sir. क्यों तो सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस कहा गया, आपका सेटअप एनालिसिस कहा गया. हाँ, सी अभी अभी कुछ टेंशन से बाहर निकले हो तो सर, राइट. 2 दिन दो, शांत हो, राइट. उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो हर एक वीडियोस को, उसके बाद आओ एग्जीक्यूट करो. रोज आ रहा हूँ मैं लाइव, टेंशन मत लो, ठीक है. सर वैसे आपका सेटअप की प्रोबेबिलिटी अच्छी है एसएमसी और आईसीटी से भी ज्यादा, इसलिए सेटअप के बारे में पूछ रहा था. ओके, thank you everyone for watching the stream. Really appreciate. Keep learning and keep growing, guys. 10 minutes में 1 hour कैंडल क्लोजिंग हो गई. सो क्लोज करने से पहले बता देता हूँ what are the major things that needs to be looked at. Right, high formation point, still the buying pressure on the wick side, right. The major continuation, sorry, the major continuation probabilities in London PM and New York AM session will be towards long. उससे पहले एक हंट बाकी है. अगर लॉन्ग की तरफ देखना है वो हंट के बाद ही देखिए. ऑन कंप्लीशन ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, जो मैं अनुराग को एक्सप्लेन कर रहा था, रिवाइंड करके देख लो. आफ्टर दैट 150% ऑफ मिनिमलिटी, 150% से रिजेक्शन लेता है, सेटअप फॉर्म होती है, वॉल्यूम साथ देती है, हाई कैलिब्रेशन कंप्लीट होके रहती है, तभी लॉन्ग के तरफ एग्जीक्यूशन देखना, उससे पहले नहीं. For all the YouTube members. Okay. Okay, sir. I'll take the time and we'll come back. Thank you. No worries, Tosif. Okay. सर बीटीसी भी एक बार दिखा दो. बीटीसी वो चल रहा है, चलने दो. ओ, कुछ तो बोलते हैं क्या वो, एनालिसिस कहा गया मेरा. सबका MTSL 13750 पे रखो. सिस्टम ट्रेलिंग एट 12250. ओके. Always remember, all the members who are watching, all the new people who are watching, एक ही चीज बोलूंगा. New strategy, new concept, old strategy, old concept, doesn't matter. Do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, or 2 months of live analysis. With that, bring the small capital to understand how it works.
while understanding, execute the trades, compound, build the capital. While building the capital, just make sure that you protect it with following a proper risk to reward. With following proper risk to reward, make sure to build the mindset that no one has done so far in the retail markets, which is removing the fear, removing the greed, removing the FOMO, and being in the directions of mathematical calculations, right? And protect your capital while executing the trades with the setup, because it's your money, hard earned money. With the hard earned money, you should know how to protect it while doubling it. Wealth is created fast, but when it's created, when you can protect it. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.